Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. I welcome you again in the session of Class 4, subject English Grammar. So, today I will take the topic from your grammar book, that is PC Ren's grammar book. So, you are supposed to open your grammar book. Today I will take lesson 22, that is comprehension. And this is lecture 1 of the same lesson. So today we will discuss about comprehension. So before starting, let me tell you the contents which I am taking during this lecture. So the contents are, first of all, I will tell you about comprehension, what comprehension is. Then we will take book exercise, and after that I will assign the homework for the same. I hope you understood. You have to take out your PC Ren's grammar book and please open lesson 22, that is comprehension. Now let's begin. Now, before starting from the book, let me tell you that comprehension is basically a reading skill, and reading is a very important skill which enriches us with knowledge and experience. Reading comprehension is the understanding of what a particular text means. इट मीन्स कि जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, जो आपको पैसेज दिया गया है, वेदर इट इज़ अ पैराग्राफ, अ पैसेज, अ स्टेंजा और इट कैन बी अ स्मॉल पोएम, सो आपको उस टेक्स्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए. इन जनरल टर्म्स इट इज़ द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड recall what was just read. So, I think you understood कि आपको comprehension पढ़ते हुए आपको comprehension समझ में आना चाहिए and you have the ability to recall while solving the particular exercise which followed by the particular comprehension. Now, let me elaborate more. मैं आपको कुछ थोड़ा और बताती हूँ. Comprehension makes connection between what they read and what they know. Basically, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है और आप पढ़ने के बाद उसके बारे में क्या जानते हो. So, let me tell you the steps to answering a comprehension. So, the steps to answering a comprehension are: read through the story carefully. So, you are supposed to read the story very carefully. बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको वो स्टोरी सावधानी से पढ़नी है. Read through all the questions. एंड आपको रिलेटेड एक्सरसाइज, रिलेटेड क्वेश्चंस भी बड़े ही केयरफुली पढ़ने होते हैं. रीड द होल स्टोरी अगेन. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस यू हैव टू रीड द स्टोरी अगेन. एंड व्हाई यू हैव टू रीड द स्टोरी अगेन? टू लुक फॉर द आंसर्स. आपको आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए वो स्टोरी, वो पैराग्राफ, वो पैसेज दोबारा से पढ़ना होता है. बी श्योर टू आंसर द क्वेश्चंस इन फुल सेंटेंस. और आपको ये ध्यान रखना होता है, आपको ये श्योरिटी लेके चलनी होती है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो फुल सेंटेंस में देने हैं, पूरे वाक्य में नहीं देने हैं, ना कि एक दो वर्ड्स में. आई होप नाउ you are able to
do the comprehension. So while doing the comprehension, you have to take these points in mind so that you will do the particular comprehension correctly. Now let's proceed with the exercise which is given in your book. So let's continue. You have to open page number 102 in your grammar book. Read the following passage, then answer the questions that follow. Over here, a passage is given. यहाँ एक पैसेज दिया गया है और आपको उस पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड आंसर्स देने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A library is a house for books. It contains collections of books and other such things that are source of information. लाइब्रेरी क्या होती है? एक किताबों का घर, और उसमें क्या होता है? बुक्स का कलेक्शन, ऐसी चीज़ें जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जो इन्फॉर्मेशन का सूत्र होता है. लाइब्रेरीज मेक इट पॉसिबल फॉर इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेसिबल टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. लाइब्रेरी लोगों के समूह को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो सभी लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेस कराती है. पीपल बोरो बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. लोग जो हैं लाइब्रेरी से किताबें लेते हैं. बोरो करना क्या होता है बेटा? उधार लेना. बट यहाँ बोरो करना क्या है? इशू कराना, कि दे लेंड फॉर सम टाइम्स एंड रिटर्न इट बैक टू द लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स अस with the books directly, or we can read the material on the internet if we get digital access. So हम क्या करते हैं? या तो हम बुक डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, और we can access the information by internet also. Now technology is so vast कि हम लाइब्रेरीज से रिलेटेड बुक्स की इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ई लाइब्रेरी. उसको हम क्या कहते हैं? ई लाइब्रेरी. लाइब्रेरीज कैन बी अ फिजिकल बिल्डिंग और रूम, और दे कैन बी ई लाइब्रेरीज दैट कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट. लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक बिल्डिंग भी हो सकती है, जैसे कि यू कैन से योर स्कूल लाइब्रेरी, and maybe in some areas central library is also there for that particular city. and libraries e-libraries भी होती हैं जो कि कोई रूम या कोई बिल्डिंग नहीं होती. you simply access the information of the book from the internet. books, magazines, newspaper, manuscripts are some common things that can be found in library. So ये सब चीज़ें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये सब चीज़ें लाइब्रेरी में पाई जाती हैं. we need to be member of a library in order to get books. बेटा लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए हमें उस लाइब्रेरी का सदस्य होना ज़रूरी है. You might be a member of your school library, और आप लोग जो हैं अपनी स्कूल लाइब्रेरी के भी मेंबर होंगे. आप लोगों के पास भी स्कूल लाइब्रेरी के कार्ड्स होते हैं, एंड फ्रॉम दैट कार्ड you can issue the books related to your class or any subject. Have you ever borrowed any books? क्या आपने कोई बुक लाइब्रेरी से ली है?
The person in charge of a library is known as librarian. और लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है, that person is called librarian. We should maintain complete silence inside a library. हमें लाइब्रेरी के अंदर साइलेंस मेंटेन रखना पड़ता है. We are not supposed to make noise in the library. People sit and study or read books with a lot of concentration. और लोग वहाँ बैठकर ध्यानपूर्वक किताबें पढ़ते हैं. They must not be disturbed. और उनको disturbed नहीं करना चाहिए. The first library consists of clay tablets on which people wrote with bones. बेटा जो पहली लाइब्रेरी थी वो क्ले से बने हुए टैबलेट्स थे और जहाँ पर लोग बोन्स की सहायता से लिखते थे, हड्डियों की सहायता से लिखते थे. These libraries were dated as old as 2600 BC. अब you can see कितनी पुरानी लाइब्रेरी थी पहली. Libraries were either private or personal collection of written books. बेटा लाइब्रेरी में प्राइवेट और पर्सनल कलेक्शन भी होती है बुक्स की. They were found in ancient Greece during the 5th century BC. और ये कब से पाई जा रही है? 5th century BC से. So over here from this passage you came to know about the libraries, and library is one of the important part of the schools also. Library schools के लिए भी बहुत important है. Basically the source of knowledge is called library. Now I hope you understand the passage. Once we have read this passage, and then you are supposed to read the exercise. फिर आपको exercise पढ़नी होती है, and then you are supposed to read the passage again to find out the answers from the passage. Now here answer the following questions. Define the term library. Now let me show you the answer in this particular passage. So first question is define the term library. So here is the answer. A library is a house for books. It contains collections of books and other such things that are source of information. This is answer 1. Okay, now let's continue with question 2. So here is question 2. How do people access information? So you can recall कि आपने पैसेज में क्या पढ़ा था. People access information from the library. Okay, what can be found in a library? So in this passage, what is given over here? We can found books, magazines, newspapers, manuscripts in a library. How can we borrow books in a library? It is also given in the paragraph. We need to be member of a library in order to get books. Okay, now the last. What do you know about the first library? So I will show you in the particular passage. Let me show you the answer. So you can write from the paragraph.
The first library consists of clay tablets on which people wrote with bones. These libraries were dated as old as 2600 BC. So you can write this answer in the particular question. Now let's proceed to the second question. So the second question is, write T for true and F for false for the given sentences. Libraries provide us with books directly. हाँ जी, tell me, क्या लाइब्रेरी आपको डायरेक्टली बुक्स प्रोवाइड करती है? Tell me yes or no. Yes, it is true कि आप बुक्स जो हैं वो डायरेक्टली लाइब्रेरी से ले सकते हैं. ई लाइब्रेरीज आर दोज दैट कैन बी फाउंड इन फिजिकल रूम. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज इन ई लाइब्रेरी you are supposed to connect through the internet. We should maintain complete silence inside the library. Yes, this is true. Now the next. Libraries in ancient Greece were only public collection of written books. This is false, because in the passage it is given over there collection of private and public books are there. So it is false. Now let's proceed with the next question. Do you read books? Write few sentences about the books you have read from your library. क्या आप बुक पढ़ते हो? आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं उन बुक्स के बारे में जो आपने लाइब्रेरी से ली. सो यू हैव टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस. ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर होमवर्क. नाउ इन होमवर्क you have to read the poem My Shadow and answer the question that follows. So here is the poem My Shadow, is on page number 95. First of all, you are supposed to read the poem. आपको ये poem पढ़नी है, and after it you have to answer the questions that follows. इसके बाद जो भी एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, फिर वो आपको करनी है. Let me show you the exercise also. This is the exercise on page number 96 and you are supposed to answer these questions based on the particular poem, and please write the answers in the notebook. You are supposed to write the answer in the notebook. After this question, 2 more questions are there. Write T for true and F for false for the given sentences. So you have to write T for the correct sentence and F for the incorrect sentence in front of these particular sentences in the box. And the next is underline the words that rhyme with the following word from the poem and write them in the blanks. I hope you very well know about the rhyming words, but your rhyming words are the same sound word and you are supposed to write the rhyming words over here from the poem. Like B. B का क्या हो सकता है? C, me. Okay, like this you have to write the rhyming words from the particular poem which you will read, that is My Shadow on page number 95, and after it you have to follow with the exercise given over here. I think you understood that what you have to do in the homework, and please try to do it, and you have to underline the difficult words also over here.
and write the meanings of the particular words accordingly. In this manner, you will be able to do the comprehension. I hope you will do it correctly. Thank you. Have a good day.